you have to just find out how much goods is exactly required. On that basis, students, you can keep your stock. Now, students, there are methods of valuing your stock. Like when I want to value my stock, there are three methods. First is like students, it is your LIFO method, then you have your FIFO method, then you have your weightage average. Now, what exactly it means? In this lecture, students, I'll give you the background of three methods, and then on this basis, we'll solve problems in next lecture. You just first understand what do you mean by LIFO. Now, basically, LIFO is what students last in first start. This is the meaning, or you can say the full form of LIFO method. I am talking about students. FIFO, it is first in, first out method. What does this mean, students? Okay. Okay, those who are able to hear me, you just learn. Okay. When we are doing this next lecture, I'll be again revising it. Okay. We'll be starting from what I have done today. We will be starting it again. Okay. Rishabh, Okay, ma'am. Pooja, you're getting. Okay. We'll again start, but if you are able to hear me, then just listen. Otherwise, next lecture, my students, again I will revise this and then we will go ahead. Clear? Yes, miss. Okay, ma'am. Okay, okay. Okay, Now, miss. students, okay. Now, students, last thing, first two things, students, what? जो students क्या हुआ? क्या है? Like suppose in warehouse, I'll give you an example. In warehouse, you have put some goods on 1st January. You have put some goods on 15th January. You have put some goods on 30th January. समझो इसमें 10 units डाला आपने रखा, इसमें 15 units रखा, इसमें 20 units रखा. Now, when you will get a order, student, order मिला है, आपको मिला है order 8 units का. Out of which lot? Lot students. 1st January, 15 January, 30 January. ये 8 units आप कौन से lot में से दोगे students? From this lot? Yes. Yes or no? Why? Students, ये पहले बन के रेडी. You have transferred that goods first. अगर आप इसको पहले बेचोगे नहीं students, समझो आप 30th January पहले बेचोगे, will become outdated. Okay. So what does last in first out says? Last in first out says means जो 30th January वाला है, इसमें से आप ट्रांसफर करो ऑर्डर, इसमें से पूरा करो, और जो पहले बन के रही है उसको रहने दो. दैट इज लॉजिकल. हाउ इज पॉसिबल? अगर आप फ्रेश बना के रख रहे हो, उसको चले जाओगे और पुराना स्टॉक निकलोगे नहीं, व्हाट विल हैपन? यू विल हैव लॉट ऑफ इन्वेंटरी व्हिच विल बिकम ऑब्सोल्यूट. बी नो वैल्यू आल्सो स्टूडेंट्स. इसको कोई खरीदेगा नहीं. कुछ ये गुड्स जैसे पुराने होते जाए, यू वोंट बी एबल टू सेल द गुड्स. दिस इज मीनिंग ऑफ लास्ट इन फर्स्ट. मींस व्हाटएवर गुड्स you have put up in the warehouse, जो लास्ट गुड डाला है उसको आप पहले बेच. इट इज रॉन्ग स्टूडेंट्स. लॉजिक बिजनेसमैन व्हाट इट विल डू, अगर मुझे ऑर्डर आया तो आई विल फर्स्ट ट्राई टू गेट रिड ऑफ ओल्डर स्टॉक, बिकॉज आई नो कि ओल्डर स्टॉक जो है स्टूडेंट्स वो ऑब्सोल्यूट होता जाएगा, स्क्रैप होता जाएगा, खराब होता जाएगा. तो मुझे अगर मैं क्या करूं, जो पहले बन के रेडी है वो उसको पहले निकालूंगी स्टूडेंट्स. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, माय दिस मतलब पुराना स्टॉक मैं नहीं निकालूंगा, फिर वो मेरा बेकार होता जाएगा. स्टूडेंट्स विल बिकम ऑब्सोल्यूट. सो लास्ट इन फर्स्ट का मतलब है जो लास्ट में आपने गुड्स फ्रेश बना के डाला उसको पहले बेचो. दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. लीफो का है जो आपने सबसे ओल्ड स्टॉक है. अभी जैसे मैं ये का लीफो मेथड से हो रहा है स्टूडेंट्स. अगर मैं फीफो मेथड से बोलूंगी, फीफो मेथड से यू विल फर्स्ट rid ऑफ दिस. 1st January स्टॉक को आप पहले बेचोगे. ओके. और यहाँ पे लीफो में पहले आप 30 January के स्टॉक को निकालोगे, विच इज टोटली रॉन्ग. So on the basis of LIFO and FIFO method, students, we try to value the inventory. हमारे पास warehouse हुआ कितना valuation है. So depending what organization is selecting, on that basis we need to find out. साथ में students, we have one like weighted average method है. weighted average method में students हम क्या करते हैं,
we try to add up the inventories that we have in our warehouse, old and new. Uska price uska per unit basis is students, we try to fix the price we are going to sell. So it is like we are taking here average. Okay, older units ka price, new units ka price हम average लेते हैं students. This all you will understand when we are practically solving the problem. This is just giving you the theoretical background, because if I'll operate here in Excel, many of you are not able to hear. So I'm just giving you a theoretical background. Once we are doing problem, then you will understand what exactly I am talking about. This FIFO method, students, it has become outdated and it is not there in your syllabus. So in your syllabus, you just have these two methods on that basis, which we need to calculate and tell what is the value of inventory, what we have in our organization. Okay, Rushabh, don't worry about attendance. I take screenshot in your attendance. While I am taking the lecture, I take screenshot of your attendance, and on that basis, I'll give you Recording attendance ka marks. stopped. Okay, here is it correct? Like here you are able to understand. FIFO means जो goods last में उनके ready हुआ है students, उसको ही बेचेंगे. जो पुराना आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस goods को पहले हम निकालेंगे. Normally as a businessman, as a shopkeeper, as a seller, as a trader, what you पुरानी goods को हम पहले निकालते हैं. And जब पुराना FIFO method is outdated, students, it cannot be utilized. It can be utilized. Okay. और वेटेड एज मीन्स हम क्या करते हैं, हम पुराने और नए गुड्स का ना स्टूडेंट्स प्राइस का एवरेज निकालते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस वी गिव कोटेशंस कि हमें ये कितने में सेल करना है. Okay.